श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद को अपने साष्टांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद को बहुत से धन्यवाद और अनेक का प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने हम सभी लोगों के लिए बौद्ध धर्म को जानने का उत्तम और सुवर्ण मार्ग बताया। All glory to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services to Srimati Radha and Gopinath. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. हमें रामायण की प्रसंग में युद्ध कांड में प्रसंग का आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिन में तो युद्ध के समय रावण और राम के बीच में युद्ध में बहुत से वानर लोग अपने राक्षस लोगों का संहार किए हैं। वो पहले उसी दिन के रात शाम के समय सायंकाल के सूर्यास्त के समय जिस समय राक्षस में शक्ति उत्पन्न हो गई, उसी दिन इंद्रजीत ने बहुत से वानरों को भी संहार किए। और उस दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण और राम भगवान के साथ सभी वानरों का नागास्त्र बांध दिए। बांधने के बाद कुछ समय के उपरांत उसी रात में गरुड़ पक्षी ने आकर इस बंधन से मुक्त करा दिया। और दूसरे दिन सुबह में अपने वज्रदंत नाम का राक्षस और अकंपना और प्रहस्ता, ये तीनों उनके सैन्य राक्षस सैन्य के साथ आकर बहुत से वारों को संहार किए और वहाँ राक्षसों के बहुत संहार हो गए। और उसी दिन अंगद ने वज्रदंत नाम का राक्षस को संहार किया और हनुमान ने अकंपन राक्षस को संहार किया। और नील ने प्रहस्त जो राक्षसों के सैन्याधिपति थे उनको वध किया। फिर दूसरे दिन रावण ने स्वयं राम भगवान से युद्ध करने के लिए आए थे। बहुत घोर चढ़ गया राम भगवान और रावण के बीच में, और उसमें रावण का हार हो गए, पराजित हो गए। पराजित होने के बाद राम भगवान ने उनको वापस भेज दिए। प्रश्न का मानने से अभी दूसरा दिन रावण आते हैं, वहाँ से कथा में आगे प्रवेश करते हैं। वो कथा में प्रवेश करने से पहले रामायण का आरंभ श्लोक पाठ करता हूँ, श्रद्धा से श्रवण कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीशैलशदया पात्रं दीभक्त्यगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनिं। लक्ष्मीनादसमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदयुग्मरुक्म तृणायमेनि अस्मद्गुरोर्भवतोदयसिन्धो रामानुजं प्रपद्ये। माता पिता तस्तनभूतिः सर्वं यदेन अन्वयानाम् आद्यस्य न कुलते कुलाभिरामं श्रीमदमूर्ना महद्वय भट्टनाथा श्री भक्ति सवन योगिवाहान भक्तान गिरिरेणु परकायन्द्रविष्णां नित्यं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्सद्भक्त्यादिपार्षदभरतं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वाश्रये। ज्ञानदमयं देवं निर्मलपुतिम् आधारं सर्वविद्यावास्महे।
पूजन्तं राम रामेति मधुरमाक्षरम् आरुह्य कविता शाकं वन्दे कोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावर्णचान्नः शृण्वन् रामकथानादं पुनः परङ्गतिं पूजन्तं मनोजं मातुल्यवेगं जितेन्द्रबुद्धिमतां वरिष्ठितं वातायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरं नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसे आत्मजे वेदः प्राचीन आत्मना वाल्मीकि संभूत रामसागामिनी पुनमति भुवनं पुण्यं महानदी श्रीराघवं दशरथम अप्रमेयं सीतापदे रघुरत्नदीपं आजनु बहुमहेन्द्रदाक्षं रामं नमामि। तपस्वायनिरतं तपसि वायुदाम्बरं नादं परिवेक्ष्यामि पुङ्गवं तपस्वायनिरतं तपसि वायुदाम्बरं नादं परिवेक्ष्यामि पुङ्गवम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामचंद्र प्रभुवे नमः। अभी तीसरे दिन जैसे पिछली दूसरी दिन में प्रहस्त वज्रदंश और कंपन और बहुत से राक्षसों का संहार हो गए। ये तीनों तो सैनिक का अधिपति राक्षस सैनिक का अधिपति थे। ये सभी लोग का संहार हो गया। अंगद ने संहार किया था और अकंपन को हनुमान ने और प्रहस्त को नील ने वध किए। और ये प्रहस्त के जैसे मारे जाने से दुखी हुआ रावण ने दैत्य महाराज राक्षस महाराज रावण ने स्वयं युद्ध के लिए पधारते हैं और श्री राम के साथ युद्ध करते। उस कथा में आज प्रवेश करते हैं। उसके प्रस्थान करते समय शंख बेरी और प्रणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने गर्जा करने और संवाद करने लगे। मैं आपको पहले दिन बताया था कि ये वानर लोग कोई नहीं है। उनका आयुध केवल पर्वत के शिखरों का बड़े बड़े पत्थर वृक्षों का बड़े बड़े कांटे यही उससे ही लड़ते हैं। कोई आयुध से नहीं युद्ध करते। किंतु राक्षस लोग ने उनके पास हर तरह के भिन्न भिन्न अस्त्र से सभी रहते हैं और देख के भय डर लगते रहते क्योंकि उनका विकराल रूप रहते हैं और विशाल का शरीर देह रहते और वो जो रूप चाहिए वो रूप धारण करने का शक्ति भी है राक्षसों के पास। इसी तरह बहुत से वानरों को किसी भी रूप धारण करने का शक्ति है किंतु कोई आयुध से नहीं लड़ेंगे। सभी लोग वृक्षों का कांटों से और शाखों से और पर्वत के शिखरों का शिलाओं से युद्ध करते हैं। ये पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों का जिनके नेत्र प्रज्वलित अंग के समान उद्भीत होते रहते हैं। गिरा हुआ राक्षस राजा रावण ने भूतगणों से गिरे हुए देवेश्वर रुद्र से भी समान शोभा पाते रहते हैं और उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से गिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र ने शस्त्रधारी में श्रेष्ठ विभीषण से ऐसे पूछते और जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई ऐसी यह सेना किसकी है। रामचंद्र भगवान ने विभीषण से प्रश्न करते हैं और इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपयुक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों का बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए विभीषण ने राम भगवान से कहते हैं
राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी के समान लाल रंग के तथा जो अपने बात से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता है वह रहा है, तो आपका अकंपन समझो। और यह अकंपन हमें द्वारा मारा गया उनसे भिन्न है। बहुत से लोग हैं जो अकंपन वहाँ 14,000 राक्षसों का खरदूषण त्रिशूल को जब वध किए थे, उसमें भी एक राक्षस का नाम अकंपन था। वो उस समय में सभी लोगों को संभाल किए, लेकिन वो बच के आ गए। किस तरह एक औरत के जैसे साड़ी पहन लिए, साड़ी पहनने के बाद उनको देखते उनका स्त्री का रूप समझकर, स्त्री है समझकर राम भगवान ने उसको नहीं मारते। उन्होंने आके रावण राक्षसराज रावण को बताता है कि महाराज दंडकारण्य में 2 मानव रूप थे, वो दशरथ महाराज के पुत्र है बोल के सुना हूँ। और उन्होंने अपने समस्त 14,000 राक्षस लोगों को संहार कर दिए, और भी एक मुहूर्त काल में, ऐसा कहते हैं। उस तरह अकंपन है। एक तो दूसरे दिन की युद्ध के समय एक अकंपन को हनुमान ने संहार कर दिया। ये जो अभी हाथी के रूप जैसे बलवान है, उनका नाम भी अकंपन ही है। ये जो अकंपन है ये भिन्न अकंपन है। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ था, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी समान उग्र समान कीर्तिमान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत वो रावण के पुत्र है। वह वर्तमान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। इसका नाम आदिका है। दूसरा एक सैन्याधिपति रहते, उसका नाम आदिका है। और एक बहुत 6 सैन्याधिपति रहते। ये दूसरा एक सैन्याधिपति है महोदय। दूसरी दिन जो सुग्रीव के हाथ में वध हो गया था, वो उनका नाम वो प्रहस्त अलग है, वो भी एक सैन्याधिपति का पति है। ये महोदय नाम से प्रसिद्ध ये एक सैन्य का अधिपति है। और सब इस तरह विभीषण ने सभी का परिचय देते रहते अपने श्री राम भगवान को। और यह यशस्वी वीर है त्रिशिरासुरा। ये त्रिशिरासुर जनस्था में जो वो ये भिन्न है, वो अलग था, ये अलग है। उनका पुत्र त्रिशिरासुरा है। और खद का 14 नरांतक है, ये भी पहाड़ियों के चोटियों से युद्ध करता है। और देखिए यह राक्षसराज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। रावण भी आएंगे उस समय वहाँ। तब शत्रुघ्न श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षसराज रावण का तेज तो बहुत ही बड़ा चढ़ा और देदीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की भांति ऐसा शोभा पा रहा है, ऐसा कहते हैं राम भगवान ने। और तब राक्षस लोग के अरे प्रभु जी आप बाहर बात करना, मोबाइल लोग। स्वामी रावण ने महान सर्प के और यमराज के समान एक भयंकर बाण को संधान किया, और रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया था उस बाण को। और वेगपूर्वक उन्हें घायल भी कर दिया, सुग्रीव को घायल भी करते हैं। और उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गया, he becomes मूर्छा हो जाते, अनकॉन्शियस, he becomes unconscious and he falls down। और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव ने पृथ्वी पर गिर पड़े। और तब गवाक्ष, गव्य, सुषेण, वृषभ, ज्योतिम और नल, ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों के उखाड़ कर राक्षसराज रावण पर टूट पड़े। ये सभी जो वानर है, ये सभी अपने सुग्रीव का मंत्री है। వీళ్ళందరూ కూడా సుగ్రీవుడి యొక్క మంత్రులు। వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే సుగ్రీవుడు మూర్చపోయాడో ఆ మూర్ఛను చూసేసి వాళ్ళు వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద పర్వత శిఖరం నుంచి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను తీసుకొస్తారు,
होल्डर्स दे गेट इट, एंड उससे ही रावण से युद्ध होता। अपने को जैसे टीवी में बताते, रावण सागर में सीरियल में बताते, उस तरह कोई आयुध से वानर लोग कोई आयुध से युद्ध नहीं करेंगे। అందరూ కూడా ఏ ఆయుధాలు కూడా అస్త్రశస్త్రాలు ఏది కూడా వాడరు, వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలే లేవు. వాళ్ళందరూ కూడా పర్వత శిఖరాలతోని రాళ్లతోని చెట్ల కొమ్మలతోని యుద్ధం చేస్తారు. रावण के सहायकों से पीड़ित हुए बहुत से वानर शरणागत भगवान के श्री राम के शरण में गए, और तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े. వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీరాముడి యొక్క శరణాగతి చేసి ఆయన్ని వేడుకుంటారు కాపాడడానికి, రక్షించడానికి. అప్పుడు రాముడు తన ధనుసు తీసుకొని లక్ష్మణ్తో పాటు అక్కడ రావణ్తో యుద్ధం చేయడానికి ముందు వస్తాడు. और श्री राम ने आर्य इस दुरात्मा वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ. प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इनका नाश करूँगा. लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम से कहते हैं, भैया मैं अकेले ही इनका संहार करने के लायक हूँ, योग्य हूँ, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इनको रावण को मैं संहार करूँगा. इस तरह कहते हैं. और उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्यपराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लगाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील करना चाहिए. ऐसा राम भगवान ने आज्ञा देते लक्ष्मण को जाने के लिए. और उस समय में तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, वॉट एवर वीकनेस इज देयर यू हैव टू आइडेंटिफाई इन रावणा एंड देन अटैक. उसके कमजोरों को लाभ उठाना है. यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेसेस. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वीकनेस, और अपने चित्रों पर भी दृष्टि रखना, बिकॉज इवन वी विल आल्सो हैव सम वीकनेस. आप उसको भी सावधानी से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कहीं शत्रु उनसे लाभ ना उठाने चाहिए. वी शुड नॉट एक्सपोज एनी ऑफ आवर वीकनेस. हियर इट इज अबाउट लक्ष्मण एंड Rama telling Lakshmana about their weakness. Similarly in our daily life also, we should, when we speak to others or when we deal with others, we should see what is the strength in him, what are the weaknesses, उनमें क्या छिद्र है, क्या किस तरह उन्हें शक्ति नहीं, और अपने में हम उनसे कितना बलवान है. केवल युद्ध में नहीं हो सकता, किसी भी व्यवहार, एनी टाइप ऑफ एक्शंस, वी नीड टू फर्स्ट थिंक, assess our capacity also we should know our weaknesses, so that we should hide our weaknesses and only should allow other people to see what we are rich. So like that, तो इन्होंने अपने लक्ष्मण भैया को बोलते कि राम, लक्ष्मण तुम उनमें जो भी चित्र है वो सब पहचान कर युद्ध करना चाहिए, और अपने चित्र को देखते हुए अपने को सावधान रूप से रखना चाहिए, और पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष भी आत्मरक्षा का करना है. और शिव की यह बात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने हृदय से लग गए, और श्री राम का पूजन भी एवं अभिवादन भी करके, पूजन भी करते, अभिवादन परिक्रमा भी करते राम भगवान वहाँ करके उन्होंने युद्ध के लिए चल दिए, उनसे रावण से युद्ध करने के लिए. हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, हनुमान क्यों इससे पहले उन्होंने जिस समय सीता माता का खोजने के लिए आए थे, उसी समय उन्होंने रावण से मिला था, और उसके उपरांत उन्होंने संपूर्ण समस्त लंका को भस्म कर दिए. निशाचर तुमने, रावण से कहते हनुमान ने, निशाचर तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त लिया है. उनको स्मरण में लाते रावण को, तुम किसी आपका किसी भी मृग, किसी भी जंतु, पक्षी, कोई भी तुम्हारे को हार नहीं सकते, देवता भी हरा नहीं सकते, तुम्हारे वध नहीं कर सकते, परंतु वानरों से तुम भय है, और दूसरा मनुष्यों से, मानव भी तुम्हारे को मार सकते, इसी तरह वानरों से भी तुम मारा जा सकते. देखो 5 अंगुलियों से युक्त दाहिने हाथ उठा हुआ है. जस्ट ही लिफ्ट हिज हैंड, ये बस है, क्योंकि कोई वानर भी आयुध से लड़ता नहीं. इवन हनुमान विल नॉट फाइट विथ हिज
क्लब दैट इज गदा, गदा से युद्ध नहीं करेगा। सभी वानर शिखरों पर्वतों के शिखरों के पत्थरों से, वृक्षों का कांटों से, बड़े बड़े कांटा लेके उससे युद्ध करते, लेकिन कोई आयुध से नहीं करते। देखो ये 5 उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा है, तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे अलग कर दूंगा। ऐसा हनुमान ने उनको भयभीत करते। रावण का आयु क्या है? अभी तो त्रेता युग है, त्रेता युग का जन्म भी हुआ। उन्होंने तो उससे पूर्व में 10,000 वर्ष शिव भगवान के लिए तप किया था। उसका आयु कोई बहुत सहस्रों वर्षों का है, कोई 10-12 हज़ार वर्ष का आयु का है। राम भगवान उस समय में, जिस समय रावण को मारा था, राम भगवान तो मानव रूप धारण करके आए, अवतार करके। उनका आयु इज 39 ईयर्स। जिस समय में उनके सीता माता के साथ विवाह था वो उस समय 12 वर्ष है। उसके उपरांत में 13 वर्ष अयोध्या में थे। 25 एट द एज ऑफ 25 दशरथ महाराज ने उनका अभिषेक करने का मुहूर्त निकाले, लेकिन उस मुहूर्त को उन्होंने वनवास में आ गए, और वनवास में 14 वर्ष 25 + 14 39 ईयर्स इज ओनली 39 वर्ष का आयु का था मानव रूप में उस समय में रावण का जुड़ा। और रावण का तो कोई 12-13 हज़ार का आयु का है। सारी या नहीं, सतयुग में 1 लाख वर्ष। उस समय में विश्वामित्र जी महर्षि ने उन्होंने 60,000 वर्ष तप किया ब्रह्मर्षि बनने के लिए। और ये त्रेता युग में जिस समय राम का ये था, उस समय में 10,000 वर्ष का है, लेकिन उन्होंने 10 से भी बढ़ के जीवन किया रावण ने। 10,000 वर्ष जब राम भगवान ही रावण का संहार के उपरांत 11,000 वर्ष संपूर्ण जगत को पालन किया, महाराज के रूप में, सम्राट के रूप में उन्होंने पालन किया। और कृष्ण भगवान द्वापर युग में, उस समय में 1000 वर्ष की आयु है, 1000 की वर्ष आयु। उस समय में कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में अवतार हुआ, अंत में हुआ, और उन्होंने 125 वर्ष पृथ्वी पर थे। 125 उनके संकल्प से ही अवतार हुआ, संकल्प से उन्होंने वापस गोल वृंदावन को चले गए। और अब कलयुग में 100 वर्ष का आयु है, लेकिन इट्स नॉट गारंटी, वो तो गारंटी नहीं। ऐसे तो कई थोड़े से लोग हैं वो 130 वर्ष का, 140 वर्ष का, 105 वर्ष का जीवित अभी भी है, अभी भी थोड़े लोग हैं, लेकिन वेरी रेयर, हियर एंड देयर यू कैन फाइंड। ऐसा हनुमान ने रावण की भयभीत करते हुए कहा, क्योंकि आप वानरों से और मनुष्यों से हो सकते, बल्कि उनका उंगलियां उठा के बताए कि अब मैं तुम्हारा आत्मा को इस देह से अलग कर दूंगा, अपना आत्मा लगे, देह लगे। रावण को बोल रहे हैं? नहीं, रावण को बता रहे हनुमान, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हर जीव में ये देह लगे, आत्मा लगे। ये आत्मा का बहुत सूक्ष्म है। आत्मा का साइज क्या है? बाल के 10,000 भाग में भाग है, और अपने अंदर परमात्मा के रूप में भगवान भी स्थित है, और उनका भी है अपना अंगूठी के बारंबार रहते। और जो अपने मनुष्य में इतना है, जो जीव है उसका अंगूठी के बराबर रहेंगे अंतर्यामी, चिमटे में लेकिन सभी जीवों में रहेंगे अंतर्यामी। इसीलिए अपन किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, क्योंकि उसके अंतर्यामी रहते और आत्मा भी रहते। आत्मा और अंतर्यामी दोनों को नहीं मार सकते, दे आर ऑल नित्य है, एटर्नल, दे कैन नॉट बी किल्ड। उसको भस्म भी नहीं कर सकते, पानी में डुबा नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, चाकू लेके काट नहीं सकते। उस तरह है जीव का। जैसे वो अपना ये देह क्षीण हो जाता, अस्वस्थता से क्षीण हो जाता, या हैंडीकैप हो जाते किसी एक्सीडेंट में, समय में ये देह को छोड़ देते, आत्मा दूसरा देह ले लेते। जैसे अपन ये वस्त्र पहनते हैं इस देह को रक्षण के लिए, जिस समय ये कपड़े फट जाता उस समय में अपन दूसरे नए वस्त्र लेते। उसी तरह जैसे अपन अपना ये देह इट इज़ नॉट फिट फॉर एनी यूजफुल पर्पस,
इस देह को छोड़ देते। जन्म और मरण केवल देह को है, आत्मा को नहीं है। आत्मा तो सृष्टि के समय ही सृष्टि हो गए। सृष्टि के बाद उन्होंने बहुत से देह ले ली। ये अपना मनुष्य जन्म से पहले लाखों जन्म ले लिए हम, एक लाखों जन्म किसी पशु पक्षी योनियों में। उस तरह अपने को बहुत से पशु पक्षी योनियों में बहुत से गए, लेकिन हमको अलग पशु पक्षी योनियों में भी बहुत से माता पिता है। उन महात्मा वानर के थप्पड़ा मारते, हनुमान ने थप्पड़ा रावण को, तो उनके इतना कहते ही बल विक्रम सन महातेजी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। आयुध से मारता हूँ, लेकिन लगने के बाद भी हनुमान को कुछ भी नहीं होता। इट डज नॉट गेट इंजूर्ड, घायल नहीं होता। और उस थप्पड़ की जोर से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। अतः दो ही घड़ी में अपने के सुस्थिर करके खड़े हो गए और उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर देवद्रोही थप्पड़ों से ही फिर मारे। रावण को थप्पड़ों से ही मार दे उन्होंने पकड़ के। और उस महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठे, जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते, उस तरह हिलते रहते रावण ने। और संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि वानर सिद्ध देवता सभी लोग ऊपर आकाश में आ जाते, प्रकट हो जाते। सभी लोग देख रहे किस तरह रावण और हनुमान के बीच में युद्ध हो रहा है। और रावण के ऐसा कहने पर रावण ने कहते तदनंतर महादेव रावण ने संभाल कर कहा, शबाश वानर शबाश, तुम पराक्रमी की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। यू आर इक्वल टू मी, प्रतिद्वंदी है बोल के बोल रहे, यू आर इक्वल टू मी। और रावण को तू अब जीवित है, इसीलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। और दुर्बुद्ध बिकॉज वी आर इक्वल, सिंस आप जीवित है, अब मार गए तो मैं आपसे पराक्रमी बनता हूँ। और दुर्बुद्धे अब तुम एक हनुमान विल टेल, पहले यू हिट मी, यू अटैक मी, आप आक्रमण करे तो मैं उसके ऊपर आपको मुक्का से मारूंगा, आप फिर जीवित नहीं रहेंगे। इस तरह उनको भयभीत कर दे। और उसी पराक्रम राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तान कर हनुमान जी को छाती में वेगपूर्वक प्रहार करता, किंतु छाती में चोट लगाने पर भी हनुमान जी पुनः विचलित हो उठते फिर वापस उठ जाते। और दशग्रीव ने शत्रुओं का मरण का विधि करने वाला आधार करने के लिए बंधा हुआ जैसा पड़ा हुआ था, केवल साधारण मनुष्य के जैसे निरूपण करने के लिए। वो एक नाटक था। रघुल के प्रधान लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, किंतु वो नीचे पड़ गए। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोगों का भुजबल द्वारा उठा लेने का शक्ति था, उनको उतना शक्ति था रावण को, किंतु लक्ष्मण को उठा नहीं सके। भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। और ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप को अपना चिंतन किया है, इसीलिए उनको कुछ भी नहीं होता। अतः देवशत्रु रावण दानों के दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ ना हो सका। दबाने के उसी तरह दबा के उनको पूरा अचेत करने के मारने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान देखकर रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र शरी के मुक्कों से रावण को छाती में दे मारा। हनुमान ने मारते और उसके मुक्कों के मारने से राक्षस रावण ने धरती पर घुटने के टेक लिया। He fell on his knees. He'll take the support of knees and he'll fell down. लगा और अल्टीमेटली अंतोगत्वा गिर पड़ा और अल्टीमेटली फेल डाउन, घुटने पर टेक लिया लेकिन फिर गिर जाते। और उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त बहने लगे। रावण के वजह से वो गिरने लगे और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष होकर गिर गए, रथ में गिर गए। ये देखकर सारथी ने क्या करते उसको भगा के लेके आए थे, क्योंकि सारथी का कर्तव्य है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो भी है योद्धा है उसको रक्षा कर रहा, रक्षा के उन्होंने उठा के लेके आए थे। लेकिन जैसा उन्होंने मूर्छित हुआ फिर वापस चेत हो जाता, चेतन आते राक्षस बोलते तुम यहाँ ऐसा कैसा वापस आए, मैं तो आपको बताया नहीं कि वापस लेके आए। तो उन्होंने साथ में बोलते नहीं मैं तो आपका रक्षा करने के लिए चला, नहीं वापस फैलने के लिए बोलते। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। लक्ष्मण उठा के हनुमान जी ने लेके आए थे और रावण से नहीं हुआ, लेकिन हनुमान ने करा। हनुमान जी के सौराज और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए, बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी टू रामा एंड लक्ष्मण। उसके लिए उन्हें हल्का हो गया, हल्का बन गया, हल्का से हो गया, उठा के लेके आए थे। एंड युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आ गए, वापस से आते शक्ति। इंद्र दिए सो रावण के कण को जो दिए सो एक ही बार उपयोग कर सकते, उस तरह नियम था। इस शक्ति के लिए उस तरह नहीं, फिर वापस आते वापस आ जाएंगे, तो वापस आके रावण के रथ पर आ जाते। और थोड़ी देर में होश में आने पर महादेवी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पहने बाण हाथ में ले लिया। लेकर शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। रावण भी निरोग हो जाता, इन्हों भी स्वस्थ हो जाता, लक्ष्मण भी। और वाणन के विशाल वाहिनी को बड़े बड़े वीर मार गिराए और देकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर दावा किया। अभी लक्ष्मण को छोड़ देते, राम भगवान ने आते रावण से युद्ध करने के लिए। दिस इज द थर्ड डे बैटल बिटवीन रामा एंड रावण। ओनली डे रावण हैज कम, बट अर्लियर डेज इंद्रजीत एंड अदर राक्षस हैव कम। पहले 2 दिन इंद्रजीत आया और दूसरे राक्षस आए, और पहले दिन रात में ही इंद्रजीत नागास्त्र का अनुसंधान करके सभी लोगों को बांध देते, इंक्लूडिंग रामा एंड लक्ष्मण। गरुड़ पक्षी ने आके उनको रक्षा करते। प्रभु जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करता है, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दो। कौन बोलेंगे? हनुमान बोलते। जैसे गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान चढ़ते, उसी तरह हनुमान ने बोलते क्या राम भगवान से, भगवान राम आप मेरे पीठ पर चढ़ जाना, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे, क्योंकि उन्होंने आकाश में भी उड़ सकता, पक्षी से उड़ सकता, मेरे पीठ पे चढ़ जाइए, आप युद्ध करिए, क्योंकि ब्रह्म भगवान का कोई रथ नहीं है, अभी रथ नहीं। अभी जिस समय वापस रावण आए उस समय में इंद्र ने मैथिली देकर रथ को भेजते, जब तक राम पैदल ही युद्ध करते रहते। केवल राम और लक्ष्मण दोनों ही धनुष बाण का उपयोग करते, बाकी का वानर इंक्लूडिंग सुग्रीवा, अंगद, हनुमान सभी लोग केवल पर्वतों का शिखरों के पत्थरों से, वृक्ष के ब्रांचेस शाखाओं से ही युद्ध करते। नोबडी फाइट्स विथ एनी क्लब और एनी अदर आयुधा। Whatever they show in TV, it is all wrong, गलत है। It is reading and explaining. It's not that I'm not telling something out of my mind. It is given in the book, in the scripture it is given. पवन कुमार की कही बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सहसा उन महाकपि हनुमान जी को पीठ पर चढ़ गया और श्री राम जी का राक्षस रावण से गंभीर वाणी में बोले। राम भगवान ने गंभीर वाणी से बोलते पहले, बिकॉज जो भी शरणागत करते, यदि आप भगवान के सामने पूर्ण रूप से विश्वास से शरणागति करें, भगवान आप ही मेरा रक्षक है, आप मेरा जीवन को जिस तरह निर्वाह करना है आपके ऊपर ही आपका अनुग्रह से होएगा बोल के आप छोड़ दिए तो विल टेक केयर ऑफ अस 100% इट विल हैपन। अपना स्वयं अनुभव से बता रहा हूँ, नॉट व्हाट इज गिवन इन दिस वन, స్వయం अपना అనుభవం से बता रहा हूँ, ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, నా అనుభవంతో చెప్తున్నా। ఎవరికైనా తెలుగులో అంటే తెలుగులో కూడా చెప్తాను, తెలుగులో కావాలి ఎవరికైనా, అందరికి హిందీ వస్తుందా? ఎవ్రీబడి యూ డు నాట్ నో హిందీ? సారీ, యా తెలుగు, షీ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, హిందీ. Surrender completely to God. Okay. See, if you completely surrender with full faith to the Supreme God,
Supreme God is only one to everybody, not only for human being, for our Sanatana Dharma. We are not Hindus. Our Sanatana Dharma is our religion name. The entire world is Sanatana Dharma, entire religion. And this Christianity, Muslim existence came only about 224 years back, Christianity, and about 1500 years ago when Muhammad Prophet was there. Before that, Sampurn Jagat, the entire world is only Sanatana Dharma. There was no other religion. Buddhist, Jainism, everything came only these 2500 years ago. Nothing was there. Only Sanatana Dharma was there, and our religion is only that one. Hindu is the name given by English people 500 years ago. How means in between Pakistan and India, our Hindu, Bharat Desh, there is one Nadi called Sindhu Nadi. Those English people, they can't pronounce that Sindhu Nadi, Sindhu Nadi. They should call it as Hindu Nadi, Hindu Nadi. And the other side, they know it was Muslims, they call them as Muslims. And here, they do not know our religion. They called us Hindus, we have accepted. We have accepted their constitution. Our constitution is our not constitution. It's only copyright of English constitution. Ambedkar has only just copied it, and again, Ambedkar constitution is not there now. Everything is changed according to Nehru's version. That is all wrong. Many this thing. I can even quote those sections, but it's not correct to quote this thing. But everything is wrong. What Ambedkar is also wrong. So, when you surrender to God, 100%, there are 33 crore demigods. Demigods mean English we call demigod, Devata log hai. Devata log ko, sabhi log ko has given duties. This for Surya Bhagwan ko, for giving us light, sunlight, for moonlight. Again, moonlight also, if moonlight is not there, we can't produce one grain of agriculture. One fruit, one vegetable also we can't produce. We need moonlight also. So, again, moonlight is coming because of the sun. All these things are different people. Agni Deva has been, fire god has been given the responsibility of the Agni. Indra is controlling 3 worlds. Varuna Devata is controlling the water. Let everybody, and we are making movements all our body. For each, for moving fingers, one Devata is there. For seeing this one, another Devata is a vision. For like that, for walking another Devata, they are controlling. So they have their duties not only in human beings, in all living beings. There are totally 84 lakhs, 44 lakh jeev hai. Right from Chimte to Chaturmukha Brahma. Right from Chimte to ant to Chaturmukha, there are 84 lakhs jeev hai. और सभी में भगवान, God is as Antaryami, we can't see him. We have God in 8 different forms. 8 different forms. One is Paravasudeva is in Goloka Vrindavana, that is Krishna is there. He is known as Goloka Vrindavana. He is, maybe I am diverting a little bit, but I will already told many times, I'll just repeat. He has made himself into 4 forms. In the Goloka Vrindavana, the entire space, this is crores of universes there, not one universe. In this universe, you are not even seeing 10% of it. In the night, you can see the star, moon, but otherwise there are many planets are there. You are not able to see. Like that, crores of universes are there. All these crores of universe makes 25% place. Remaining 70% is Kshira Samudra, Goloka Vrindavana. There, Krishna, who is known as Paravasudeva, he formed into 4 forms. One is he himself as Paravasudeva, with Radharani will be there. He will be there, he is there as Aniruddha, Pradyumna and Sankarsana. From Sankarsana, in all Vaikuntha, in all universes there are Kailasa is there, so Vaikuntha is there, Brahmaloka is there and many other planets. So in this every Kailasa, Sankarsana takes the form of Shiva, as in all Vaikunthas he takes the form of Adishesha. And Aniruddha, he forms as Mahavishnu lying on the Adishesha in all Vaikunthas. Pradyumna, you know, when we are sleeping, when we are in deep sleep, they say half dead. At that time, what happens is our Atma, the soul, which is just one part of 10,000 parts of our hair, that is the size of Atma, that part will go away from our body. And it tries to fulfill its desires of previous lives. It goes away, it will be wandering. By the time you awake,
This Pradyumna, again that Atma will come back. How? Going away and coming back is controlled by Pradyumna, again not in one living being, in all living beings, he says. In every living being, some crores of population is there. You know what is the population of human beings, like that? You do not know. Facts will be there. You are there, uncountable, uncountable, innumerable. So in those things, everything, Pradyumna is there, he is controlling everything. Like that it happens. And first living being to come out of Vasudeva, that is Krishna Paramatma. What you see the Krishna, he is not the Krishna I am telling about the Goloka Vrindavana Krishna. He is also the same Krishna, I will tell you that also. That Krishna, first Jiva, first living thing is Radharani will come out. Radharani is not Srimati Radharani. He says Srimati Radharani, nothing wrong, saying that is nothing wrong, but she is not Srimati. See, we ourselves, we can't live alone. We need some company. We try to have company in the form of children, parents, or brothers, sisters, or wife and husband. We try to have some company or some friends. Like that, Krishna Paramatma is controlling all the Akila Kota Brahmanda. He also needs company. So, first Jiva to come out is in the form of Bhakti, that is Radharani. And that Radharani takes the place of Lakshmi in all Vaikunthas along with Mahavishnu. Like that it happens. So calling Radharani Srimati, it is nothing wrong. And in Bhagavatam, there is no mention of Radharani at all. Here we are worshipping Radharani. In Bhagavatam, which is also given to us by Chaitanya Mahaprabhu, and also Prabhupada has translated in many languages, but there is no one word about Radharani. But she is in the form of Bhakti. The Radharani, what we speak about and what we see here, it is the form of Bhakti in the Goloka Vrindavana. Same Krishna Paramatma, he has and it's not that 10 avatara, Dashavatara, that is wrong. Dashavatara wrong nahi, wo bhi correct hai, lekin keval it's not 10 avataras, many thousands of avataras are there. Many thousands of avataras are there, and out of he has manifested himself as Vamana through Aditi's Garbha, like a brother of Devendra. He has taken the form of a fish, Matsya Avatara, Kurma, Tortoise Avatara, Varaha Avatara, wild boar, and Narsima of human being, of lion, of this thing. Again, as a normal human being like Vamana, Parashurama, Rama, all these are normal human beings. Again, Vedavyasa Bhagavan, who has given us the Mahabharata and Bhagavatam, he is also incarnation of Lord. In Dwapara Yuga, when Krishna is incarnated, when he has incarnated, at that time five forms in the Dwapara Yuga itself. Vedavyasa Bhagavan is also Krishna Paramatma. Krishna himself is Krishna Paramatma, the original Goloka Vrindavana Krishna. And Arjuna, Arjuna is also Krishna. Through Rukmini he will be having one son, Pradyumna, that is also Krishna. Again, Pradyumna's son, Aniruddha, is also Krishna. Right? There itself 5 avatars are there. So, Krishna is having many this thing. During Krishna avatara, during Dwapara, I am telling about this Krishna, what we have here. This Krishna also, when he has incarnated, I am not telling birth, we have born to mother. When we through the womb, we have, please sit down, please. So, what happens is, when we are in the womb of the mother, we can't control our birth in particular parents, this thing. Whereas Rama, he wanted conserved mother, he has taken birth. Krishna, he wanted to be mother in the Devaki's this thing, he has born, but he has not born. At that time, for the Kamsa to see, she was pregnant. At the time of birth, she manifests over there in the prison with all his weapons. Devaki will say, "Oh God, why are you coming, appearing like this? If you come this, Kamsa will come and see you and he will kill you." She is saying God, but again she is afraid. As a mother, she feels, so you please come as a small child, normal child. Then he comes with the flute in his hand as a small child, and that exchange of this thing happens. Exchange of child will happen with Yashoda and Yashoda's child. Again, Subhadra is Krishna's sister. He gives 2 boons to Durga Devi, Yogamaya.
because Yogamaya, Krishna takes help of Yogamaya. When Rohini was pregnant, Devaki was 7th time pregnant, he asked Yogamaya, see now Devaki is pregnant 7th time, you need to save that boy. You take that child and shift it to Rohini's Garbha. Because Rohini also Vasudeva's wife only. There, she will tend. That is nothing but today's scientific word cloning. Today's cloning, that is what happened 5,300 years back itself. Those, whatever scientists they have made research, they have not newly invented anything. They have made research and they have made these things. So it's a cloning process. Like in that cloning process, she helps there. And also Krishna then it says, you take a daughter's incarnation of Yashoda Mata, it will be exchanged like that. Yashoda, Yogamaya become the daughter of Yashoda. It will be exchanged at the time of Krishna. And at that time he gives 2 boons to Yogamaya. He says, oh Devi, you have helped me 2 ways. I am giving you 2 boons. One is in this Kali Yuga time. Whoever worships you, you fulfill all their desires. Irrespective of accepting moksha, accepting salvation, you can fulfill all their desires. And second one is, you will be born as my sister in the womb of Rohini Mata. Like that, after Krishna is born, again another child will be born to Rohini, that is Subhadra. We worship Subhadra also. So separately, if you go to some Devi temple and do the worship of Kali, that is not wrong. Because Krishna is given in, this is Kali Yuga. ये कलयुग में हम दुर्गा देवी का आराधना कर सकते, जो भी अपना इच्छा है सभी पूर्ण होंगे, सफल भी होते. It's not wrong. But otherwise, you are doing the worship of Subhadra over here. It is nothing but Durga Devi itself. So like that. So if you go to any other this thing, they can't give salvation. No one can give salvation. 33 crore devatas, demigods are there. They can't give you salvation. They can only see if you go to some excise minister, ask about sales tax, can you do? No. If you go to some finance minister, ask for industry, can you do? No. You have to go to the respective portfolio minister with that portfolio. Similarly, you need to go to Devatas. We do not know which Devatas do what. So Ashwini Devatas, they take care of health. But we go to somebody else, we ask for the health. That is wrong. So instead of, when you need to respect all Devatas, why? They are all servants of God. They are all servants of God. You need to respect them. And when you go to other temples, just pray to them. You say, oh Devi or Swami, please give me devotion in Krishna. Please give me devotion in Krishna. That's all. Krishna means again any incarnation. Rama, Narasimha, Varaha, Srinivasa, anything. In Krishna incarnation, any incarnation, give me devotion in Krishna. And also, when you come to this temple, any of the Krishna's temple, incarnate temple, you need not tell him. Because see, she wanted to understand something in English. You told me, please tell in English, she will understand. Like that, when you should give her clothes, when you need to pay the fees for her college, or what you have to, type of food you have to give, you will give. She will not demand anything. So they are demanding something that is different. But even without demand, you provide. Similarly, we are all children of God. We have now tarah ka alag se bin roop ka manaku 9 rakala sambandham undi. Meeku Hindi ardham avutundamma Hindi English? Hindi samajhte hai kya? तो क्या होता, अपने को 9 तरह का संबंध है. We have 9 types of relations with God. One is we are servants to Him. You might be working with somebody. Now so many thousand lakhs of people are working with Tata. Tata is no more anyway, but he was the boss. But not like that. That is only temporary thing in the material this world. But otherwise, we are all servants of God. We are all servants of God. That is the one. The other one is, He is our Mata, He is our Pita. We are all. Vasudhaiva Kutumbam. I am not telling because Modi has told. It's there in the script. That's the reason our Prime Minister told Vasudhaiva Kutumbam. The entire, all the universe, all living beings, not human beings, all living beings are Vasudhaiva Kutumbam. He is the creator. He is our Mata and He is our mother, father. Mata bhi unai, Pita bhi unai. And He is our first Acharya. Who is the first Acharya?
In the material world, who is the first guru for the child? Mata. Very good. Mata will only tell. Once the child comes to know about this one, mother will not tell. I am your mother. This is rice. This is chapati. This is dal. He is your father. Until and this, child will not recognize. We do not know who is the father, who is the father. Even myself, even I don't know. When they have told, oh, she is my mother, she is father, I identify. Like that, in this material world, mother is the first guru. But otherwise, he is our acharya. He is first acharya. And he is our friend. He is our friend. If you think like Devaki Mata and Yashoda Mata, Krishna was her son. Like that, you think he should be son. You imagine he will be his son. Like that, we have 9 different. He is apna hitaishi bhi knowing. He is the best friend. You need not go to any friend and seek advice. He is our best friend. He must be in this Vigraha Rupa. This Vigraha is made by the human beings only. It might be made of mud, metal or gold, whatever it is. But we have installed this God here chanting Vedic mantras. With that one, he is having all power to listen, to see and all those things. In this Kali Yuga, till Dwapar Yuga, people could see Krishna in form of Rama, Vamana, Parashurama, they could see, but they never realized that he is the Supreme God. They thought he is an ordinary human being like them, with some strange powers. But in Kali Yuga, we can easily see him in 5 different forms. That is, in the Vigraha, this is called as Archarupa, deity form. This is not idol. Idol means some Gandhi statue in the roadside or Ambedkar statue, they are all idols. They are not deities. This is called as deity, Vigraha, Archarupa. In Kali Yuga, you can put him in the form of Krishna, you can put him in the form of Srinivasa, you can put him in the form of Rama, any form you like. If you want to put him in the form of some demigod, you can make him in the demigod form also. There is nothing wrong. Like that you can do. So here we have made him different this thing. Chaitanya Mahaprabhu is also there, who is a devotee, like that. Everything there is there. So, like that, what happens is, though he is done in Vigraha Rup, other one is in the form of scriptures. We have scriptures like Mahabharata, Ramayana, Bhagavatam. Whatever I am telling, repeatedly I am telling, this is all from the scriptures. Scriptures is also Bhagavan. And he is in the sound form, Dhvani. I am telling Krishna Rama, Krishna Rama. Hearing this Dhvani, this is also this thing. And we will be chanting the Mahamantras. Like that, in the Mahamantras also Krishna is there. You know who is under the control of the Mahamantra? We are all under the control of Bhagavan. Bhagavan is also under the control of somebody. Can you tell under whose control he is? He is under the control of mantra. He is under the control of Mahamantra. That is the reason when we chant the Mahamantra, we get that attachment, we'll know his relationship. So, I think I will continue with this also with the explanation so that at least in a few minutes I can complete this chapter at least today. Oh, I can continue, it's not. Hare Krishna. So, Sri Ramchandra की यह बात सुनकर महाबली राक्षसराज ने रावण के महान शेष पर रोड पर भर गया और उसके पहले ही वैर का स्मरण भी आया है. He tries to, this will go on till 7 o'clock. Just before 7 o'clock, I will be stopping. Because Gaura Arati there at 7 o'clock, that takes half an hour. Whatever reason, wherever I am, I have to stop there at the end. If you have time, you can continue. I will be doing. So, रावण ने तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी को राजकुमार ही अपने बाणों द्वारा जनसान निवासी उन 14 राक्षसों को संहार कर डाला था. ये अद्भुत दर्शनी योद्धा थे. Ravana is told that Rama only killed. The Rama, what is saying is he is only killed the 14,000 army people in the Dandakaranya forest. और ये जैसे भगवान इंद्र के वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात हुआ गया, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने वज्र के और अष्टि के समान तेजी बाणों से इंद्र शत्रुओं का रावण की विशाल एवं सुंदर छाती वेगपूर्वक महारा. He hits on the heart of the Ravana with that arrow. जो राजा रावण वज्र और अष्टि के आघात से भी हुआ, रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र ने ये चमचावत हुआ अर्धचंद्र का बाणा, हाफ मूंड
half moon shape arrow he will aim at Ravana, sorry. चमका तो अर्जुन का बाण को हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस का सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाल दिया. He will see that his crown will fall down. He will hit the crown, that crown will fall down first. And उसके उपरांत में उस समय धनुष ने होने से रावण his already his bow is cut. Ravana's bow is cut. He does not have any bow. और उसके सर के सामान अपना प्रभा को बैठा था. सायंकाल के जिसकी प्रभा शांत हो गई उसी सूर्य का समान निस्तेज हो गया था और मुकुट का समूह खट गया, श्रीहीन भी हो गया. एंड एट दैट टाइम रावण ने आज बड़ा भयंकर काम किया है. एंड ही विल मेक हिज chariot. What Rama is on the ground. Rama is on the ground as well as on the back of Hanuman, but he does not have any chariot. And he is fighting with Ravana. He made his chariot to be broken to pieces. His horses have been sent to Yamaloka already. It is not that they are dead. Sarathi is also dead. Now Ravana will say, भगवान श्री राम के शिवा ने कहते हैं, निषाद राज मैं जानता हूँ ही तो युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ. आई एम ऑर्डरिंग यू, प्लीज गो अवे, फॉर टुडे आई एम लीविंग यू. Rama could have killed him. He says, I won't kill you now because you don't have any chariot weapons. Killing an unarmed person is again adharma. Unarmed person should not be killed. Abhimanyu was killed by 6 people who was unarmed. That was wrong. It was adharma. Similarly, he says, you don't have weapons, you don't have chariot, you don't have anything, I don't kill you. लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकल. उस समय रथारूढ़ होकर तू फिर मेरे बल देखना. यू कम डाउन विथ योर चैरियट, यू सी माई स्ट्रेंथ अगेन, आई विल शो यू व्हाट इज माई स्ट्रेंथ. भगवान श्री राम के ऐसे कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया. गो बाय वॉक, he goes by walk. He does not have any chariot, no elephant, no horse, nothing. He had to run. He had to run. चुका था, धनुष काट दिया था और घोड़े भी तथा सारथी मार डाले गए थे. महान किरीट खंडित हुआ चौका था और वह स्वयं बाणों से बहुत पीड़ा हुआ था. He was hit with many arrows. He was injured. और उस तरह Ravana will go and take rest for a day. If you have any questions, we have another 10 or 15 minutes time. Because if I go into the next chapter, it might take longer time. It will take 1 hour for the next chapter itself. It's very big. So, if you have any doubts, you ask any doubts, I'll tell you. From Mahabharata, Ramayana, Bhagavatam, and even about the God also, you can tell me. I'll try to tell you. You have any questions? No. You are fully satisfied. So 100% you can do this, surrender to God. I am telling you out of my experience, not one. I was saved 8 times from death and on the bed. Death on the bed. Major accidents, major thing. I had a heart attack, almost life is gone. But he only just gave me the life. Thrice had head injuries. Doctors declared me dead and they gave me 72 hours, 48 hours time. I was alive again back. 8 times. I just tell a short way. I was a very, very rich industrialist, otherwise medium size. But otherwise, demonetization Modi has taken in 2014. But 25 years back, God has taken away everything. Whatever was there, He has taken away. I never repented. I was just surrendered to Him. He has taken care of me. Again, everything is back. I am not doing any business or anything. My son and the daughter-in-law, they are doctors, they are professionals. I am not doing. I am just taking care of my granddaughters. I am fully, whatever He has taken back, He has given back everything in a different way. Like that, I was saved 8 times in the life itself. Once while going to Tirupati, myself, my spouse, my second son, we have fallen down 25 feet in the Ghat road. Not on Tirumala God and different God, small God. We just screamed, Govinda, Govinda. He came. At that time it was midnight, 12 o'clock, a tractor full of, we are 25 feet down. 10 people came in the tractor. They saw us falling down. They came down, they lifted us.
My wife spouse, she was unconscious, injured. She was there on the bed for 40 days. She could not do anything, but only she could move only this thing. She was paraplegic. She could hear, see, and talk. She heard Bhagavad Gita since morning 6 o'clock to night 10 o'clock. And on the last, she told me, you forget all the businesses. You forget all the business, Krishna will take care of. I thought Krishna was my second son, he would take care of. And he heard the verses from Bhagavad Gita right from 8th chapter to, in the 8th chapter, 5th sloka to 11th sloka verses. As told in 11th sloka, she asked us to stop there. She left her. It's not that while dying we have to close our eyes and leave. That is wrong. We need to tip of the nose here, with the vision over here and center tip. He said, Krishna will take care of. Krishna, I thought Krishna my son. No, but otherwise, this second son Krishna also, later he became a brahmachari in ISKCON, one of the ISKCONs in Mumbai. He was there for 10 years. He was my guru. I had 5 Siksha Gurus, 1 Acharya, 2 Acharyas, 5 Siksha Gurus. 5 Siksha Gurus, out of 5 Siksha Gurus, 3 are, 1 is my mother, who said, read this Bhagavad Gita sloka, 1 sloka every day. Now I read 1 adhyaya every day for the last 30 years, 40 years. And she was 1 Siksha Guru. My spouse, she was my another Siksha Guru. She made me get into this one. Krishna will take care of you. You need not do anything. And third one, my son, every day during his 10 years stay in the ISKCON temple in Mumbai, every day he used to talk on phone with others. I speak only for 1 or 2 minutes, not more than that. But every day he take class on phone for 1 hour. Like that, there are 3 Shagurus. And one of the disciples of my Acharya is my Siksha Guru. That have 5 Siksha Gurus and 2 Acharyas I have. One who is initiated with Ashtakshi Mahamantra, and the other one is who has given me the Mahabharata, Ravana explanations. Like that, I have 2 Acharyas. It's not that many people they say we should have only 1 Guru. That is wrong. Until unless you have complete knowledge, you can have the authorized persons as your Gurus. We cannot call anyone as Guru. Many people say, oh Guru. That is wrong. Nobody has Guru. Guru means who is our Savior. Guru word is he is Savior. That he is our Bharta and Bharya we say in Hindi. In Telugu. Bharta and Bharya in Telugu is husband and wife. But it is not the Telugu word. We use it in Telugu like that, but other it's a Sanskrit word. Bharta means a protector. God is our protector. So we all, whether in this materialistic nature, you are all women, we are all men. But before God, we are all women only. We are all his wives, he is our Bharta. That is one type of relationship. But he is our protector. We are under his control. So we are all Bharyas. Like that. So we need to understand the words. By each and every word in the Sanskrit has different this thing. You also can read Mahabharata, Ramayana, everything, but reading and understanding is different from participating in the satsang. Because we are not Sanskrit scholars. Until unless you hear from an authorized Acharya or Guru, you will not understand the internal hidden meanings. Internal hidden meanings can be understand only by participating in such preachings, whether it is in this temple or any temple, but who are using the correct authorized scriptures. Nowadays what happened is, for the purpose of making business, they have changed many events to attract people to sell their products, make money. And even there are good acharyas are there. I don't say all are fake, but many fake acharyas have come into existence. You cannot go to such fake acharyas and take their advice, because everything is changed. For commercially, even those so-called fake acharyas, for making money, they do that one. We should not go to fake acharyas. So, acharya should be an absolute authority. And whatever books we are reading, you read. With this newspapers, what you do, you read once, not in for 5 or 10 minutes. Particularly these 2 days, the papers are coming in 24 pages, 30 pages, 40 pages also. Just within 5 minutes you turn the papers, just throw it.
you never touch it again. Whereas the scriptures, it is not like that one. I am telling Bhagavad Gita, every day one chapter. I am doing for the last 40 years, 45 years. My grandchildren who are just there, 12 years and 18 years, they also do one chapter a day. They also do one chapter a day. So we need to train them because we do not know when our life is coming to an end. अपना आयु कभी पूर्ण होता किसी को पता नहीं. It can end any time. इसीलिए अपन पहले से ही अभ्यास करना है. To glorify God, there are 4 ways. One way is chanting directly the mantras. I have different mantras given by Acharya. It is Ashtakshi Mahamantra, but it is regulated by many conditions and regulations. I have to follow them so that I can chant. Whereas this Chaitanya Mahaprabhu, till Dwapar Yuga, God has manifested himself as God. In Dwapar Yuga, Krishna thought, if I take another incarnation in Kali Yuga immediately, nobody will believe I am God. If I say I am God, nobody will believe, nobody will trust. So he has taken the form of a devotee as Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu has given us Hare Krishna Mahamantra, which does not have any condition. 24 hours you can chant that Mahamantra, and it is not for only 1 or 2 months. It's a lifelong mantra. And this Mahamantra, while you practice, and he has also instructed 64 rounds on Japamala. There is a Japamalas which contain 108 beads. Counting that beads, you need to do 108 to 64 times, but after 700 years of time, we don't have that much time. We try to run away from here because we don't have time. Don't blame anybody, it's wrong. Because in this Kali Yuga time, we need to earn a lot. It's a struggle for existence. So, if earlier days only husband used to go and earn, but now husband has to earn, children has to earn, wife has to earn. If parents are healthy, they have to earn, everybody has to earn. Otherwise, medical facilities, legal facilities, legals it's in crores. You can see how much Saibal is charging. Some other justice is also charging. They also take bribe. So crores, it goes in crores. So we need to earn to save ourselves, to live. So while living, while performing these activities, you remember God. While driving a bike or this thing, you can't do it on Chambamala. Chant in mind. You chant in mind. Even if you, while traveling in bus or car, if you chant loudly also, others who are sitting with us, they will also hear. Oh, they are talking about the God. They will hear. Even they will be lucky to get that information. And when you go home, your older parents, or even if younger parents are younger, they may, for some reason, they are unable to come over here. For health reasons or time, because no time, they are unable to come here. Whatever you have heard over here, you tell them, glorify about God. When you meet your friends and relatives, don't discuss about the movies and other nonsense things, which is a waste of time. Instead of that one, you talk about these scriptures. They're all called as itihasas. They are scriptures, history. Itihasa means history, real history. It's not a myth. Many people, atheists, they think it is a myth. It's not a myth. It's a really happened thing. This Mahabharata has happened 5,000 years ago. Ramayana has taken place some 12 lakhs years ago. 12 lakhs years ago. So all these things are history. Like you believe in Akbar and Babur stories and about the Britishers' history. Similarly, these are history. You need to have faith. But if you have faith, whatever in this given in this dharma, you need to follow. Again, what is dharma? If you tell, for the last 45 days in Mahabharata, I do Mahabharata during Tuesdays and Wednesdays in the same time. Thursdays is Ramayana. During the morning from Tuesday to Friday is Bhagavatam in English. Dharma was discussed for 45 days. If you ask me dharma, now I can't repeat that one 45 days, this thing, because you don't have time, even I don't have time. So, the dharma, what in simple way, dharma means it's a righteous path. You should be truthful, honest. You should be having sympathy for every living thing. Not only just this one, even for trees. When you want to pluck a flower or a fruit from it, just if you understand or not, you don't have that one. You think that is understanding, you tell to Tulsi Mata or anybody.
I am taking your vegetables for the purpose of offering it to the God. I am taking your fruit for the purpose of offering it to God. And you take it. Then you offer it to God, not take away. He does not take in a mustard green of food, whatever you offer, it will be like that. But when you have that in the form of prasadam, you will be relishing that prasadam. It will be very tasteful. Like that you need to do. That is, second is you living creatures, you have to be kind. You are helpful to everybody. You should, that means again giving charity in the form of materials only you need to do. Otherwise, you will become partners. Whatever these beggars they take, they don't use it for themselves. They have a team leader. Team leader collect all those things. They give them food packets, send them away, and they misuse that whatever collection is there for interrogation, going to be other women, gambling, and whatever they send sins they make. We are the partners. We are the partners. But if they do some good, we are not partners. If they're good, we are not partners, but only for in their sin we are the partners. Remember. So not only to the beggars, even if you go to some orphan institution or old age home, you before giving them anything, go there. You find out how many children or old people are there. According to you, whatever you feel like taking clothes or food grains or fruits, you take them and give them in the form of good. Even if not cash, even if by the net banking you transfer them also, they draw it and misuse it, you become the partner in this sin. Like that it happens. So today's time is almost coming to end, we can't continue. I'll read out the ending slokas of Ramayana and we'll chant Hare Krishna mantra just only for 5 times I think so. But otherwise you chant as many times as possible throughout your life. You try it for 30 days, a month, so your mind will be peaceful. When your mind is peaceful, all your activities will be successful. If your mind is not peaceful, आप कुछ भी काम नहीं, it will be unsuccessful. Not only that, like that if you practice, you will be remembering him. At the end of all, I told you how my wife has left. My mother also left in the same way. My elder brother left in the same way. My second son left in the same way. My second son is not there. He's already left. 12 years back, he went to Muktinath. While he was chanting in the flight was crashed, he's gone. Like that. So 5 people have experienced. Myself I was saved by 8 times I told. Now time has come to end. I wish to complete fast. एवमेत पुरावृत्तिम् अहमबद्धमस्तु वा प्रार्थविश्रब्धं पलं विष्णुवर्धदां मङ्गलं कौसलेन्द्रिय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती सर्वमङ्गलं श्रीदेतीन्यां श्रीनिवासाय मङ्गलं वेदान्तवेद्य मेघमूर्तये पुण्यश्लोकाय मङ्गलं स्वामी ज्ञानसफलदारिणी संशय सदा भक्त स्वामी मङ्गलं दण्डकां शत्रुवे गुरुदेव भक्त भक्तदास मङ्गलं साल सव्यक्त नगरीं आशाद्य नगरीं दिव्याभिषिक्ता रामोदर मंगलम मंगलासात परे मदाचार्य पुरोगमय सर्वैश्च पूर्वै सद्गस्तु मंगलम कायेन स्वस्ति प्राप्यन्त्यां न्यायेन मार्गेण महिमैषाः गोवशुभस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्पते स्वभावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणाति सर्पयामि श्री नारायण सर्वमी सर्वम श्री कृष्णावस्तु मंगलम 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 इत्य मंगलम. You have to recite Hare Krishna mantra just 5 times and loudly please. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda. Loudly please. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. जय श्री राधा गोपीनाथ की, जय श्री जगन्नाथ स्वामी की.
जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्री महाराज की, जय श्री महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्वा की, जय श्री रामायण महाग्रंथ की, जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, जय प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। This is recorded live on YouTube channel.